May I request you please come and join us and moderate this session. और आज इस पैनल डिस्कशन में वो खास बातें होगी, वो चर्चा होगी, इसको आप सभी जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। For this wonderful event, Udan, wherein I have amazing distinguished guests in front of me and my friend Paresh as well. So it was a lovely surprise to see Paresh on the panel list. So once again a good evening to all the guests. So अब हम जब बात करने जा रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं, हम सारी चतुर्वेदी जी भाई साहब, माननीय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी से कृपया आप मंच पे पधारें और दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ में मैं निवेदन करता हूं श्रीमती ऋतु बरावत जी और साथ में आमंत्रित करता हूं perspectives on technology and the future AIs. Technology creates possibilities though, but it takes vision, entrepreneurship and execution to transform those possibilities with real impact. So with this, we are coming to an inspiring entrepreneur, startup mentor, investor and business strategist, Mr. Paresh Gupta, founder and CEO of GCEC Global Foundation, TEDx speaker, so much to his profile. So ladies and gentlemen, I want everybody's attention because Paresh is going to answer me another difficult question. In today's world, Paresh, in today's world where ideas are abundant but execution is rare, what do you believe separates successful entrepreneurs from those who never move beyond the idea stage? Okay, so पहले तो ना दो corrections हैं मुझे, तो you should not be surprised because you already knew my name. So we shared the same poster. So I knew that you are coming and you knew that I am coming. So I'm so happy and glad to meet so many friends. Likewise. It's a great place to meet all the friends again. So I'm so happy. And just one quick update to my profile that I have now launched a company in Singapore. It's called deserves a round of applause, ladies and gentlemen. So it's called IICFE, International Institute of Commerce, Finance and Entrepreneurship. And we are supposedly the first 100% agentic AI fintech education institution. Wow. So and I am hoping that everybody in this room makes good use of that opportunity. So coming back to, I think your question, which was like when they embrace AI, like what are the three mistakes that they do? So one is, I think I have seen, and like every company is trying. It's not a challenge; it's an opportunity, and you need to embrace it. I think those are the three key things. If companies do that, then they'll be able to embrace AI successfully. Wonderful. So people need to accept one thing. भी है क्या, तो मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं अब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है और ऑनलाइन से जितना आप फ्रेंडली है उतना कोई हो नहीं सकता है, तो प्लीज ट्राई तो कीजिए, एक बार किसी वेबसाइट के ऊपर जाइए तो सही और ट्राई तो कीजिए भाई, आप जहाँ हैं वहाँ तो है ही है ना, तो एक बार मतलब technology AI is not perfect, and then being respectful of time, I'll just answer it like there is a term in AI that we say garbage in garbage out. अगर आप जितना अच्छा आपका इनपुट या जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना ही अच्छा आपका आउटपुट मिलेगा. If the prompt this sitting to the first tier because they got the good mentors sitting to the next seat where they will be working on. So the good mentor should be there, they should able to get it. The fourth, I'll say the student should able to get the capital from Jaipur itself. If I बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। डीजूमोए फ्यूचर इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो राजस्थान को जाना जाता है इसके अपने कल्चर के नाते, हेरिटेज के नाते, ट्रेडिशंस के नाते, और इस सब के साथ साथ आपने जो एक फ्यूजन बनाया कि सबको मिलाकर टेक्नोलॉजी को इसके साथ जोड़ा, आईए को जोड़ा, सोशल सर्विस को जोड़ा, इंडस्ट्री के फील्ड में काम करने को जोड़ा, इन सब को मिलाकर के आपने जो Soumya Agarwal ji from Safe Route is going to receive Emerging Startup Visionary of Jaipur Award 2026. बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं हो जाए। वही गनी क्लैप स्टाइल 1 2 1 2 3। बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को, श्री अरुण अग्रवाल जी को, साथ में अरुण आर्य जी को भी। हार्टिस्ट कांग्रेचुलेशन to each one of you, आप सभी को बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। Round of applause for all awardees. सभी awardees को बहुत बधाइयाँ। Ladies and gentlemen, the next awardee is Mr. Gaurav Kshetrapal ji from OneShift Technologies is going to receive Startup Leader of the Jaipur Award 2026.